Good morning, students. In the last class, I have given this problem. Solve the LPP graphically. Some of the students sent their answers. बाकी पिलांग ପାଇଁ କରିଦେଉଛି ଏଟା ଏ typical ଗଣିତଟାରେ ଆମର more than one maximum ଆସିବ. Okay, maximum there are 2 points or 3 points you can have, so that ଆମେ ଏଟା କରିଦେବା. Okay, so first of all ଆମେ in equation को equation କରିଦେବା, then we'll go for solving this. Okay. Solution by changing the inequation of the constraints to equation. Okay, जो constraints जाक अच्छी inequation जाक ताकू equation कर दो. First थिले हमरो x1 plus 2x2 less than 2000. ताकू हमें x1 plus 2x2 is equal to 2000. x1 is equal to 2000 minus 2x2. गोटे टेबल हवा x1 x2. If I put 0, I will have 2000. If I put 1000, then 2000 is your 0 is your. Then second is your x1 plus x2. x1 plus x2 less than equal to 1500. x1 plus x2 is equal to 1500. x1 is equal to 1500 minus x2. x1 x2 1500 0 1500 0, and third one ta x2 less than equal to 600, that is x2 is equal to your 600. Okay, we have all three equations. Now then origin test. Now by using origin test we have all three are since less than equal to अच्छी हमर इठी satisfy हबो. Since origin satisfies all three, therefore the setting will be towards the origin, and graph, remember the graph will be in first quadrant as the non-negative restrictions. मन रखी था मुझे लिवे देवी. So here it will be right. Got it? बर्तन ग्राफ करिया. ग्राफ रिमेंबर एठी हमरा 2000 अच्छी हाईएस्ट, सो हमें 500 नबा. 500 1000 1500 2000. 500 1000 1500 and 2000. Okay, now we'll draw the lines. First 2000 0. Okay, if I put x2 0, first point as 2000 0, this one, and 0 1000, eta 0 1000. So a line ta mu first of all draw kar deli. Okay, so then eta amaro shading towards the origin asyo mu धीरे धीरे करछि. देन आसले हमरो 1500 0
this one 0 1500. Okay, so आरो नाटा लिखि दूची L1 x1 plus 2x2 is equal to 2000. एटा हमरो L2 x1 एटा लिभे गबा परसेंटेजटा हल्ला काम x1 plus x2 is equal to 1500 हैला एटा भी तळ पटको. Then finally you have this one 600. x2 is equal to 600, little bit more than 500. So amar ethi somewhere jibo 0 600 this is your x2 is equal to 600. So इटा भी तळ पटे हबा. Okay, now here this is your feasible reason. Okay, इटा हबा. So the feasible reason looks like this. So here O, eta A, now this is B, you have to calculate, this is C and this is D. O, A, B, C, D is our feasible reason with coordinates. केतरे हमको डायरेक्ट इंस्पेक्शन रे जाना पड़ जाउची. O रो जाना पड़ी गला O00, A भी जाना पड़ी जीवो 1500 0, D भी जाना पड़ी जीवो 0 600, but we have to calculate for B and C. B और C हमको जाना नहीं, सेट पे हमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो. ओके, लेट्स सपोज एटा L3 लाइन टा. सो फर्स्ट B, फॉर B टे देखो ए पॉइंट ए लाइन टा L1 और L2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L1 एंड L2. L1 टा हमरो x1 plus 2x2 is equal to 2000. एटा x1 plus x2 is equal to 1500. Solve it. x2 is equal to 500. Therefore हमरो x1 is equal to 1000. Okay, so what about the coordinate of B? 1000 and 500. Then we will have coordinate of C. For C, as C ta L2 ta हमरो 600, intersection of point between line, this one line 1 and line 3, ये point टा line 1 and line 3. हमें line 1 टा x2 is equal to line 3 टा x2 is equal to 600, line 1 टा x1 plus 2x2 is equal to 2000. Now put this here, x1 plus 2000 minus 1200. Okay, 600 x2 टा 1200 बोले और रहला 800. x1 is equal to 800. हैला x1 is 800 and x2 is equal to 600. Okay, got it? बुझा पड़िला. So this is your about C, right? আসলে আমরা 800 600 then এটা আমরা
these are the coordinate of C, 800 and 600. Now we'll go for maximization. Okay, so सही गले हमरो A, B, D, B आउ C रो कोऑर्डिनेट बर्तन हमें बाहर कर दवा मुटा लिखै दउची now ZO Z maximum is equal to हमरो एटे x1 plus x2 0 ZA ZA आस्थिला हमरो 1500 शून्य so 1500 plus शून्य that is equal to 1500 ZB आस्थिला 1000 and 500 1000 plus 500 1500 ZC 800 plus 600 that is 1400 ZD 0 plus 600 that is 600. Okay, so here there are two maximum points. Okay, there are two maximum points at A and B. Both are same. Okay, therefore Z maximum is equal to 1500 and one solution x1 1500 x2 0 or Z maximum is equal to 1500 x1 is equal to 1000 and x2 is equal to 500. So you may write any one of the answer. Okay, got it? बुझा पड़िला, right? So you have the solution of your earlier questions, right? Now we'll see some unbounded solutions. Unbounded किछि देखिबा हमें where you have feasible reason टा गोटे bounded जेमती देखो हमरो ए क्वेश्चन रे feasible reason टा हमरो all side bounded हे थिला गोटे पेंटागन बोलिया थिला तेरो नाटा भी OA BCD हितला पांचटा ना देथिले but in case of unbounded you have no bounded figure हिला सेतरी किछि बाउंड्री रहिबोनी सेति पई normally in case of unbounded feasible region you have minimization minimum आसीबो तार maximum आसीबो नाही ओके मुटी के लिखि दउची got it बुझा पड़िला now unbounded feasible region. Now normally we have unbounded feasible region when your Z is okay when Z is minimum okay when the Z or that is objective function is minimum then we have unbounded feasible region or LPP. Okay, so
जेड मिनिमम ही दउथबो हमरो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जाको बिकॉज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हेले जेतु सेटा अनबाउंडेड हेतिबो तारो बाउंड्री नथिबो यू कैन नॉट हैव ए बाउंड्री वॉल और यू कैन से मैक्सिमम साइज फॉर योर आंसर ओके देयरफॉर एठी हमरो नॉर्मली जेड मिनिमम दउथबो बाकी नॉर्मल प्रोसीजर हमें एज इट इज जेमती करथुले सेमती करिवा हमें केवल देखिबा जे एठी हमरो जेड मैक्सिमाइजेशन बदला जेड मिनिमाइजेशन देबो सो दैट हमें एठी प्रॉब्लम जाको सहज रे कर दे परिया हम गोटे सहज भी करछि अनबाउंडेड प्रॉब्लम रो ओके सो सॉल्व द एलपीपी अनबाउंडेड बाउंडेड एमती किछि देई नथिबो हमें व्हेनेवर यू हैव मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन दैट केस तुमरा अनबाउंडेड ही हबो सेठी हमें जेड मिनिमम बाहर करिवा ओके सो नाउ वी हैव सॉल्व द मिनिमाइज एलपीपी सरला सॉल्व द एलपीपी graphically okay now z minimum is equal to 30x1 plus 45x2 subject to you have 2x1 plus 6x2 greater than equal to 4 5x1 plus 2x2 greater than equal to 5 and x1 x2 greater than equal to 0 this is the question okay so now we'll do the solution of this question write down this question ita hame bhal ke likhi diyo completed ओके सो एज ए नॉर्मल प्रोसीजर जेमती हबा कथा हमें सेमती करिवा से प्रोसीजर भितरे हमें ग्राफ भी टाणीबा ग्राफ टाणीला परे हमें निजे निजे जानि परिबा जे फिगरटा अनबाउंडेड हेची तापरे ताकू धरि करी हमें पॉइंट बाहर करिवा एंड बाय टेकिंग दोज पॉइंट्स हमें सॉल्यूशन बाहर करिवा ओके ना एज यूजुअल सॉल्यूशन रो फर्स्ट रे चेंजिंग द inequation of constraints to equation and solving it okay so first equation ta amar achi 2x1 plus 6x2 greater than equal to 4 2x1 plus 6x2 is equal to 4 2x1 is equal to 4 minus 6x2 by 2 okay so if I put 0 4 by 2 2 he jibo if I put 4 by 6 4 by 6 पकैले 6 6 कैंसिल हो देखो केमती पकाइबो if I put 4 by 6 6 6 कैंसिल 4 4 minus 4 तो 4 by 6 that is 2 by 3 बोले 0 होला ट्राई करिया 0 हबो बोली कहितली मु then the second one 5x1 plus 2x2 is greater than equal to 5 then 5x1 plus 2x2 is equal to 5 then 5x1 it will be better 2x2 is equal to 5 minus 5x1 and x2 is equal to 5 minus 5x1 by 2 okay now put x1 is equal to 0 sorry 1 पकड़े एटा 0 अच्छा x1 0 पकड़े एटा 5 by 2 ओके
2 अधा. Okay, got it. Then origin test. Now in the case of origin test, both the equations are greater than अच्छी दीटा जाक से दीटा जाक सेटिस्फाई हम ना जमती कि फॉर एग्जांपल एटा इक्वेशन 1 टा 0 + 0 इज ग्रेटर देन 4, इक्वेशन 2 टा 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. बहुत दीटा जाक हमर फॉल्स अछि. 0 केबे 4 टू बड़ नै कि 0 केबे 5 टू बड़ नै. Therefore origin not satisfied. Hence shading will be away from origin. And remember, in first quadrant एटा बारंबार लिखुची न लिखले भी चलिबो, बट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट रे ही हमरो ग्राफ टा करिबा. ओके, इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. गॉट इट हैला. बर्तमान ग्राफ करिबा मन रखता 2002/3 1005/2 मटा लिभेई देबी. ओके, 1 2 3 1 2 3 हाइस्ट जेतु हमरो कम अछि सेतबे 1 2 3 नेली. फर्स्ट केते नै आइदिला 2 0. ओके, 2 0 फर्स्ट नै आइदिला. व्हेन आई पुट 2 0 हियर, सेकंड टा 0 2/3. इटा आइले हमरो 1 0 to 1 2/3 टा समवेयर हियर हबो. तो 0 2/3 2/3 कहले लेस देन 1 होची. मु एग्जैक्टली तो नहीं ने एटी समवेयर रख देछि. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. ओरिजिन टेस्ट लिभे दोछि हे गेला. नाउ हियर the equation is 2x1 plus 6x2 is equal to 4. एटा ऊपर पटे away from origin टा एटा हमरो एटा x axis एटा y axis एपटे हमें x1 नबा एपटे x2 नबा. now this is your origin थारु दूरे नबा हमें. Okay, then second 1 0, this is your 1 0 0 5/2 5/2 कहले 2.5. this is your 5/2 0 5/2 in between 2 and 3. okay, एटा भी बाहर पटे जीव away from origin. Okay, now therefore this will be your feasible reason. ठीक है, डार्क कर देली. ओके, दिस इज योर एटा इक्वेशन टा हला 5x1 plus 2x2 is equal to 5. ओके, सो ए पार्ट टा हला हमरो ए पार्ट टा एटा पूरा एटा हला हमरो फिजिबल रीजन. सो आर बाउंड्री नाही ऊपर पटे नाही तळ बाउंड्री टा आमे नबा एठी
এটা suppose A, এটা suppose B, এটা suppose C. So A, B, C is our unbounded feasible region. Remember this one. Unbounded. हमें केवल एतिकी नहीं चाहिए हमें. हेला? Okay. So A भितरु हमें पॉइंट जाका बर्तन पकेवा. Therefore the coordinates of A हेला बुझा पड़िले unbounded. Therefore coordinates of A तो हमको जाना अछि केते 0.5/2 B एटा भी हमको जाना नहीं था. B के हम कैलकुलेट करिया 4B कर दबा. बीटे जो लाइन अछि ताको सॉल्व कर दबा. एटा केते होची 2x1 + 6x2 = 4. एटा 5x1 + 2x2 = 5. एटा इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 2 आकु 3 गणी दबा. इक्वेशन 2 * 3 एले केते होची 15x1 6x2 15 तळे एटा पके दियो 2x1 6x2 = 4 माइनस 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 कैंसिल 15 2 गेले 13x1 = 11 x1 = 11/13. So put the value of x1 here. 2 × 11/13 plus 6x2 = 4. Therefore 6x2 = 4 minus 22/13. Okay. तो 52 ରୁ 22 गले 30 30/13 x2 = by 6 टा हे जिवो एटा 30 रे बिले 5/13. So what about B? B टा हला 11/13 and 5/13. and C के हमको जाना अछि 2 0 हेला. This is your C, this is your B and this is your A. Okay, तीनटा पॉइंट आसला. ए तीनटा पॉइंट नबा आउ ए ऊपर किछि पॉइंट नबा नै बिकॉज़ हमको जाना नै भीतर पॉइंट हमें हेतमे z मिनिमम टा बर्तन बाहर कर दबा. हेला बुझा पडिला मु लिबेई देबी. Now z minimum कितने देखिला हमको क्वेश्चन रे 38x1 + 45 x2. So z a is equal to 30 into 0 45 into 5/2. So it becomes 540 5 25 540 225/2 that is say 12.5. ZB 30 into 11/13 45 into 5/13. Do not cut it. Eta 330 eta 225. This becomes 555/13. Okay, so it becomes 1352 हेले 3 5 13 दुणे something. Okay, 42 point something. And ZC is your 02 30 into 0 45 into 2 that is equal to your 90. Okay, so there are 3 points you have. तो तीनटा जाक पॉइंट आसला परे तापरे वर्तमान तमे देखियो जे which one is your minimum कोटा तमरो मिनिमम अछि. ओके देखि दबो जे कोटा मिनिमम अछि. दिस वन
सबुठु सान इटा तो 112 पॉइंट समथिंग एटा 90 आसला देयरफॉर z इज मिनिमम एट b b टा केते 11 by 13 5 by 13 therefore the answer is z minimum is equal to and x1 is equal to 11 by 13 and x2 is equal to 5 by 13. Okay, this is the final answer to your question. Okay, so इठी आमे मिनिमाइजेशन हबो z minimum करियो पड़िबो. When you have z minimum, in that case your answer will be this one. Okay, now I am giving one problem for your homework. Hila completed. Solve the LPP graphically. Okay, the question is z minimum 1.5 x1 plus 2.5 x2 subject to x1 plus 3x2 is greater than equal to 3 and second equation is x1 plus x2 greater than equal to 2. Okay, and x1 x2 greater than equal to 0. सहज अच्छी, you can do yourself. तमें करी कि मते as usual जेमती पठौथिले आमे सेमती पठेइबा. It will be better. पठौचंती किंतु less number of students आमे पठौचे अब टिके अधिका improve करियो. Okay, thank you for today. See you in the next class. Have a nice day.